Welcome, dear students. I am Sumit. Today we'll be doing the 8th chapter, Human Health and Disease. In today's lecture, we'll be talking about the causes of disease by pathogen and Koch postulates. And we'll also be talking about the indirect transmission of disease. In the last lecture, we talk about the transmission of disease, which is basically of two main types: direct transmission of disease and indirect transmission of disease. Direct transmission of disease is by the direct transmission, like by contact with infected person, or droplet infection, or contact with soil, animal bite, or through placenta. In the last lecture, we read about the direct transmission, and from the contact with infected persons, some diseases like chickenpox, smallpox, syphilis, ringworm, athlete's foot takes place, while due to droplet infection or through sneezing, coughing, spitting, etc., tuberculosis, pneumonia, cold, influenza, whooping cough, etc., diseases takes place. Tetanus and blood poisoning is usually spread through the contact with soil, while rabies is spread through the animal bite. Many of the diseases like German measles, HIV, syphilis are usually spread through the placenta. These are somewhat genetic, as from infected mother it transmitted to her child through the placenta. Placenta is an extra embryonic tissue from which mother is connected to their child. In today's lecture, our main focus is the indirect transmission of disease first. What is the indirect transmission of disease? Indirect transmission means when the pathogen of certain disease reaches the human body indirectly through some carrier vectors, and when we talk about indirect transmission of disease, some intermediate agents are necessary, or some intermediate carriers are necessary for the transmission of disease. Indirect transmission takes place through many agents or many vectors. These include arthropod vectors, vehicle-borne methods, airborne method or airborne vectors, fomite-borne vectors, and human carriers. Let we begin the indirect transmission through the arthropod vectors. Arthropod includes many of the insects. It means the insect act as the carrier of the disease, and from certain insects the disease or pathogen is carried, and from this pathogen this disease is spread to other individuals, other population or organisms.
So the arthropod vector includes insect, and the most common insects which can also spread diseases or pathogens include mosquitoes and houseflies. So arthropod vectors include housefly, and as we know that many of the diseases like typhoid, cholera, dysentery, ये जो भी डिजीज है टाइफाइड कोलेरा डिसेंट्री, ये हाउस फ्लाई के थ्रू, हाउस फ्लाई कैरियर का काम करता है, इसमें स्प्रेड होती है। सेम मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो कैरियर वाली डिजीजेस क्या हैं जिनको मॉस्किटो कैरी करके लाता है? दीज इंक्लूड मलेरिया, येलो फीवर, फिलेरिया and dengue. There are so many diseases: malaria, yellow fever, filaria and dengue. Like malaria is caused by plasmodium, which is malaria parasite. A tiny protozoan is plasmodium, which is responsible for the disease. Plasmodium malariae and Plasmodium falciparum are the two common plasmodium. Yellow fever, filaria, dengue also caused by some intermediate agents or mosquito. Then rat flea. From the rat flea, प्लेग एक डिजीज जो बहुत ही डेंजरस डिजीज है, ये रैट पॉइजनिंग से होती है, रैट के थ्रू फैलती है। तो रैट इसमें कैरियर का काम करता है, इंटरमीडिएट एजेंट का काम करता है। सीसी फ्लाई से स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, एंड सेंट फ्लाई से लेशमैनियासिस एक डिजीज हो जाती है जिसे हम नाम देते हैं लेशमैनियासिस। तो ये जो भी डिजीज थ्रू हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, रेड फ्ली, सीसी फ्लाई, सेंट फ्लाई के थ्रू हो रही हैं, लाइक लेशमैनियासिस, स्लीपिंग सिकनेस, प्लेग, मलेरिया, येलो फीवर, फिलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, cholera, dysentery, these all are spread through the indirect transmission of disease by arthropod or insect vectors. The second one is vector-borne method. What is vector-borne method? The pathogens of some diseases are caused by drinking contaminated water, food, ice or milk. So many of the diseases are vector-borne method. The pathogen is present in the contaminated water or food, and when we drink the contaminated water or eat the contaminated food, the pathogen enters in our body and causing the disease. The third one is airborne method. As it indicated by its name, the pathogen of some diseases are carried by air or carried by dust.
Like as we know, many of the pathogens are present in the air, and these pathogens transmitted in us through the air or through the dust particles present in the air. Then the next one is fomite-borne methods. Fomite-borne methods are the methods in which the pathogen of some diseases are enters through the use of contaminated articles of some of the patients, and these contaminated articles include the towels, cloths, utensils, toothbrushes, etc. It means जब हम किसी डिजीज्ड पर्सन की कुछ कंटामिनेटेड आर्टिकल्स को यूज़ कोई दूसरा हेल्दी पर्सन कर ले, लाइक किसी पर्टिकुलर डिजीज पर्सन पेशेंट की टावल को या उसके क्लॉथ्स को या उसके टूथब्रशेस को कोई दूसरा नॉर्मल हेल्दी पर्सन यूज़ करे, तो उस टावल से या उसके जो बर्तन हैं उनसे या टूथब्रशेस से वो डिजीज जो है हेल्दी पर्सन को भी स्प्रेड हो जाती है। तो इसको हम बोल देते हैं फोमाइट बॉर्न मेथड्स। एंड द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन कैरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी क्लासिकल केस इज देयर। इसके बारे में हमेशा बात होती है। एक बहुत ही क्लासिकल केस है जो है मैरी मेलोन का, और इस मैरी मेलोन को एक निकनेम भी बाद में दे दिया गया, टाइफॉइड मैरी। बेसिकली मैरी मेलोन वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन। ये एक रेस्टोरेंट में कुक थी और बहुत ही फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक्ट एज अ टाइफॉइड कैरियर। देखिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है। कई बार ये पैथोजन इस तरीके से भी काम करता है कि वो किसी इंडिविजुअल किसी पर्सन के अंदर रहता है, लेकिन उसमें डिजीज के कोई सिम्टम नहीं होते, ना ही वो पर्सन में वो डिजीज दिखती है। ये इसका क्लासिकल एग्जांपल है मैरी मेलोन। मैरी मेलोन में मैरी मेलोन में टाइफॉइड का पैथोजन था, लेकिन मैरी मेलोन को टाइफॉइड नहीं था। मैरी मेलोन में टाइफॉइड का पैथोजन था, लेकिन मैरी मेलोन एक्ट एज अ कैरियर। और मैरी मेलोन शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन। तो हुआ क्या, इस मैरी मेलोन ने क्या किया, ये टाइफाइड कैरियर की तरह एक्ट की। और जब ये कुक बनी तो उस रेस्टोरेंट में जितने भी लोग खाना खाने आते थे उनको टाइफाइड होने लगा। जब बाद में पता चला, बहुत सारे लोग एक साथ बीमार होने लगे, और जब सभी में एक बात कॉमन देखी गई कि सबके सब लोग उस मैरी मेलोन के रेस्टोरेंट में खाना खा के आए थे, तो इससे फाइनली ये पता चला कि भाई मैरी मेलोन, जब इसकी टेस्टिंग हुई कि भाई मैरी मेलोन तो टाइफाइड मैरी बन गई, है ना। तो सी कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर। कई सालों तक मैरी मेलोन ने टाइफाइड फैलाने का काम किया।